एआई सबकी जॉब खत्म कर दे, ये डर है हमारे। अगर खत्म नहीं करेगा तो बहुत सारी जॉब्स हर फील्ड में कम हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू वन डाटा 60 to 70% ऑफ द जॉब्स विल नॉट बी देयर इन ऑल प्रोफेशंस इन नेक्स्ट 5 to 10 years। बट एक प्रोफेशन ऐसा है जिसमें एआई हेल्प तो कर सकता है, पर प्रोफेशन में कोई जॉब्स नहीं जाएंगी, कैरियर ग्रोथ नहीं रुकेगी। वो है प्रोफेशन एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेट, एज ए जज। इंडिया में 1 लाख केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 65 लाख पेंडिंग है 25 हाई कोर्ट्स में, और अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। टोटल मिला के 5.5 करोड़ 6 करोड़ केसेस चल रहे हैं। कहा जाता है कि हर 10 मिनट में एक नया वकील चाहिए, और ग्रोथ इमेंस है इसमें। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशन है एज एडवोकेट और एज ए जज। नो लिमिट ऑफ मनी, नो लिमिट ऑफ पावर, नो लिमिट ऑफ प्रेस्टीज, एंड प्लस आपका अपना ऑफिस होगा, अपनी टीम होगी, लॉयर्स की, जूनियर लॉयर्स, सीनियर लॉयर्स की होगी, और आप 10-15 साल बाद एक ऐसा कॉर्पोरेट ऑफिस डेवलप कर रहे हैं जो जनरेशंस तक चलेगा। ये 1 जनरेशन इन्वेस्टमेंट है। क्या आप उस माइंडसेट के हो जो जनरेशन वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, नॉट ओनली ऑफ मनी, पावर, प्रेस्टीज, प्लस ए इंटेलेक्चुअल वेल्थ ऑफ नॉलेज इन द लॉ फील्ड? दैट इज द पावर ऑफ लॉ प्रोफेशन। स्टूडेंट्स, हमारा 30 मिनट्स का सेशन सुनो यूट्यूब चैनल पे, द अरुण भाटिया। आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि आप कैसे वकील बन सकते हैं, कैसे जज बन सकते हैं, और कैसे लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। दैट इज द वे वी आर हेल्पिंग द कम्युनिटी and our brothers and sisters and young minds. So go to our channel, the Arun Bhatia, the complete solution as a advocate or a judicial officer. लॉ वो प्रोफेशन है जिसमें आपको क्या मिलता है? स्टेटस, पावर और बहुत सारा पैसा। मेहनत कम, आउटपुट ज्यादा, और एवर ग्रोइंग प्रोफेशन है। यू कैन स्टार्ट दिस प्रोफेशन फ्रॉम ए स्मॉल टाउन and can go to the capital cities of the state, and one day you can reach to the Supreme Court. But if you become a leading lawyer, senior lawyer, money will not be a problem, power will not be a problem, status will not be a problem. But if you become a judge of district court or high court or Supreme Court, you will be at the top of the world with lot of responsibilities, with immense power, prestige, and lot of money you will get. That is the thing you can achieve, and we are going to tell you how you can achieve that, how you can make a roadmap for this. Let us start. If you enjoy debating in the school or at home or among friends, language is not a problem, whether it is a Punjabi or Hindi or English. You should have a ability to talk and present your thought in front of your people, in front of your friends and family. Number 2, you need to have a confidence in your communication. Whether you're able to communicate with confidence, can put your point. Next is whether you are problem solver. If someone comes to you, I'm facing this problem, so can you find the solution? Can you find the solution? Next is, are you curious about current affairs? Because law is ever changing. Changing means new amendments come, new verdicts come. Whether you are able to update yourself through newspaper, journals, and through the websites of High Court and Supreme Court verdicts, plus whether you are able to read the latest judgments. Do you enjoy reading or learning? Can you understand between the lines? Can you make something out of nothing? Do you want to make a positive difference in the society? Because lawyers protect their clients from state, from police, from any authority, and even from the society. So if you want to make a positive impact in the society, so that you can help the people to take care of their rights, which may be
from the government, from the state, from the police, from the society, or if you find someone needs the protection, someone needs the rights, maybe the financial rights, maybe the property rights, maybe the civil rights, and so on. So this is a profession where you can grow from almost zero, from almost 1 to 100. There are many other professions where you will not be able to grow so much what you can grow as a lawyer or as a judicial officer. स्टूडेंट्स, यहां हमने दिया पूरा रोड मैप. अगर ये स्लाइड्स, अगर ये वीडियो आप 5-7 मिनट सुन लो, 10 मिनट सुन लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा माइंड में कैसे मैं टॉप लेवल का लॉयर बन सकता हूं, लीगल एडवाइजर बन सकता हूं, एडवोकेट बन सकता हूं, जुडिशियल ऑफिसर बन सकता हूं. Anything related with the law, you can achieve the highest level. Just go through this. First is you are in class 10th, let us suppose. You have to have a strong foundation of your academics. But if you're in class 2, what subject you should choose? Any subject you can choose to go for law school, for law college, law degree. But it is better to have a political science, better to have an English literature, psychology, economics. Why? Because these subjects will help you to understand the law. Political science will help you to understand the constitution. Legal studies subject will help you to understand the constitution of India. And psychology will tell you how you can understand your client, how you can understand the honorable judge, and how you can argue and counter-argue with the other lawyer, opposing lawyer. Now, this is grade 12. But then you need to prepare for an entrance examination if you want to go to the top schools of law. That entrance test can be after +2, and that is known as CLAT, or it can be AILT. That means you start preparing for CLAT examination at least 12 months before this. We are going to tell you next slides how you can prepare. What is the syllabus? What is the curriculum? What type of questions do come? What is the bifurcation? हमने क्रैक किया है, कैसे आप क्लैट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो. Next is what? Get admission in the good law college. Now, what is a good law college? Maybe in Bangalore, maybe Nalsar, maybe National Law Institute of Bangalore, maybe Delhi School of Law, and so on. But that depends upon your aspirations. That depends upon your career roadmap as a lawyer. Even you can go to the local universities of your state or the city. Even then you can become top level lawyer. You can become top level judicial officer. You can go to the High Court and Supreme Court. But you need a roadmap. You need a planning for that. So we are going to discuss how you can achieve that goal with minimum input and getting maximum output out of it. Next is internship. So once you are in the law college, you have to attend and completing your law or during the law, you need to attach with some leading lawyer, a good lawyer. But if you are fortunate, you can be attached or you can attach yourself to the senior advocate, provided you are sitting in the district or the city which have high court. But if you are in a small city, no problem. You can attach to the leading lawyer of those city. That means you can join any criminal lawyer, any civil lawyer, taxation lawyer, and so on. So become a good student with that lawyer. Next is bar counsel. Once you have done your law, you have completed your law degree, and you have done the internship with your law, then you have to register yourself with the Bar Council of India, and then you have to give a paper known as IBE to qualify as All India Bar Examination. Once you have, this will give you the license to practice as a lawyer. And this is based on your law, degree, syllabus, curriculum, plus the real cases, plus the apprenticeship you have done with a good lawyer. Next is start practicing as the lawyer, attaching with some senior lawyer. Maybe for 1 year, 2 years, 3 years. Once you start understanding and you build up a clientage, then start taking few cases independently, but with the consultation of your seniors. Maybe after 3 to 5 years, you're done,
and you are independent lawyer with your independent office, independent staff. Maybe you will be at the age of 30, maybe at the age of 28, you will be independent. Such a good profession. In other professions, if you talk of medical, it may take 10 years to become a good doctor, 10 to 15 years sometimes. But here, you're spending only 5 to 7 years to become a lawyer, good lawyer of your city. But that doesn't stop here. यहाँ पे खत्म नहीं होता, बहुत लंबी रोड है, आप बहुत आसानी से वहां तक जा सकते हैं. कैसे? एक्सपीरियंस गेन करो, diversify your portfolio, work with different lawyers, work for different areas, civil, criminal, taxation, cyber law, etc. So that will give you much more understanding of this. And once you have done this for 5, 7, 10 years, then start thinking, oh, I need to become a criminal lawyer. I need to become a civil lawyer. I need to become a cyber lawyer. I need to become a lawyer which deal with economic offenses or corporate law. Then after 10 years, 15 years, if you are sitting in the city which has a high court, you have built up your base. Network बनाओ, advocates की parties में जाओ, senior advocates से सीखो, जुडिशरी के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, रिस्पेक्टफुल रिलेशन बनाओ, क्लाइंट्स के साथ प्रॉपर रैपिड रखो, क्लाइंट्स के साथ केसेस डिस्कस करो, उनकी तैयारी कराओ, मेहनत करो 5-10 साल, and then you can apply to become a senior advocate in the high court. Once you are a senior advocate, no problem of growth. You will be the lawyer who is designated as a senior advocate. You will be respected by everyone, starting from your colleagues, from society, from public, even the politicians, even the judicial officers will take you very seriously once you have achieved that status. And then you have team of dozen lawyers under you, maybe 2 dozen lawyers under you, and you are very selective in taking the cases. Everything is being prepared by the junior lawyers once you are a senior advocate, but it will take 10, 15, 20 years to become that. And then if you want to switch over to the judiciary, you can be nominated to High Court judge after that. Then you will be enjoying the services as a senior High Court judge. So that means that you will be taking important decisions. You will be much more respected in the society than any other person around you, because you are the part of judicial system. And High Court judge means something. But if you don't want to become a judge after becoming the senior advocate or an advocate working for 10 years in the High Court or 15 years in the High Court, then you can be a consultant to the number of multinational companies, number of national level business corporations, number of organizations that will build up your confidence. That will give you immense respect, money, and power. Even in the courts, the judges will take you very seriously. Next is law entrance examination. Students, you should know how you can prepare for the different law examination, when to prepare, what is the syllabus, which entrance exam you need to give, and how you should prepare. So CLAT, you need this much marks only. It is a 5-year integrated program, and it is an entry to the national law schools. This is a syllabus, and we have approximately 24 national law universities. Then this is All India Law Entrance, National Law University of Delhi, English language, current affairs, GK, logical reasoning. Here is a legal reasoning, and you can join this university, a prestigious university where you will build up the network with the people who will grow with you, and those people in your class, those students in your class may one day become a senior advocates, leading advocates of High Court and Supreme Court, and maybe judicial officers, maybe corporate lawyers working at national, international level. Then SLAT, this is a Symbiosis, Pune.
You can join that institution now. Then you have a MH set, CET. That is a Maharashtra state level examination, like each state has. Punjab, Haryana, UP, they have their own state level examination, or the local university entrance test. Sometimes they don't have the entrance test. You just apply based on your +2 marks, but you have to apply on time. Then university level, this is again the same. So all these are based on your entrance examination, or there are many local level universities, private or government, where you can join law degree without giving entrance examination. But keep in mind, keep your mind very focused that after passing out from this degree, what I'm going to do and how I can prepare during my law degree to become a leading advocate in the long run, senior advocate in the long run, or to become a judicial officer. You can start preparing for your PCS judicial. That means first year of law degree, you should be very much clear where I'm going to land and how I can go for that roadmap. Now we will go to the next page. Law entrance examination pattern. Now this is a CLAT. CLAT you will get 120 questions. 120 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का पेपर, और एक क्वेश्चन करेक्ट है और अगर गलत हो गया, ये सारे कहीं भी आपको इतनी इंफॉर्मेशन शायद नहीं मिलेगी एक जगह पे. अगर आपने 10-15 मिनट की वीडियो सुन ली, आप लॉ के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, एंड देन यू विल डिसाइड वेदर आई एम द पर्सन फॉर दिस और नॉट. स्लैट स्टेट लेवल महाराष्ट्र का, and this is this. So these are the entrance examinations. The most procedures, this one and this one, these are the most procedures, and also the Symbiosis International Deemed University, where you can do your law from Pune. Now we will move to the next. Now here we have given the roadmap for class 10th, 11th, 12th, and how you can prepare your CLAT examination or law entrance examination. If not interested to prepare, you can go to the local state university where they take the admission based on your +2 marks, or sometimes first come first. There are many good state universities. There are many good state universities which are public as well as private. If you're a class 10 student, improve your English, reading habit, GK, reading newspaper, magazines, listening to TV news, and sitting in the group of friends who are interested to prepare for law entrance. Class 11th में हो तो legal reasoning, proper current affairs, logical reasoning, reading comprehension. Class 11th में serious तैयारी करनी पड़ेगी आपको CLAT की, या किसी भी +2 के बाद law entrance test की. Class 12 हो गए, now you have to prepare very seriously. You have to go through the syllabus and start thinking that you are preparing for a mock test, speed test, accuracy, and previous questions and current topics. Last 3 months में आपको mock test देने चाहिए. खुद जो कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो या हमारे वीडियोस देखो द अरुण भाटिया पे जाके, you will get lot of good material preparing for law entrance. Section wise टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, पेपर कईयां दा पेपर रह जाता है, so you need to practice as a mock tester. इस पेज ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੋਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੇਡ 11 12 ਪਲੱਸ ਡਿਗਰੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ BA LLB 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫੀਸਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, IAS ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਅ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. दैट मीन तेरे को 2 चीज़ ओपन हो गई, चाहे तुसी लॉ पासे जाओ, PC जुडिशियल से जाओ, चाहे तुसी वकील बनो, या तुसी IAS भी दे सकते हो, UPSC भी दे सकते हो. नेक्स्ट इज BBLLB. BBA मींस बिजनेस, सो कॉर्पोरेट लॉ तो सूट करेगा अगर लॉ करोगे. अगर तुसी BBA की हुई नाल BBA प्लस लॉ, BCom नाल की हुई है तो टैक्सेशन एंड बिजनेस लॉ. अगर तुसी BSc की हुई है, BSc नाल भी LLB है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ. अगर LLB ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
you can change the career. That means you can prepare for a PCA judicial, you can become a lawyer, you can become corporate lawyer. You have so many opportunities to go. But LLM उन्होंने करनी है जिन्होंने ये है बैचलर, ये है मास्टर्स ऑफ लॉ, जिन्होंने टीचिंग साइड से जाना है, प्रोफेसर बनना है लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी और रिसर्च करनी है रिगार्डिंग लॉ, और PhD भी वही जान के जिन्होंने स्कॉलरशिप लेना है, रिसर्च जाना है या अकेडमी जाना है, प्रोफेसर बनना है लॉ यूनिवर्सिटी, लोकल यूनिवर्सिटीज एंड सो ऑन। तो हम चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। इतो पता लग गया BLLB वाला किधर जाएगा, BBA वाला किधर जाएगा, कोई बिजनेस कर रहा है तो कितने जाएगा कॉर्पोरेट लॉ के विच, BCom कर रहा है तो जाएगा टैक्सेशन लॉ एंड सो ऑन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज ए स्टूडेंट सो दैट तुहानू क्लैरिटी हुई। देखो स्टूडेंट पढ़ाई तो सारे करते हैं, मार्क्स भी सारे लेंगे, बट कैरियर की प्लानिंग कौन करता? करेक्ट प्लानिंग, राइट रोड मैप असी हेल्प कर रहे हैं। और अगर तुहानू ज्यादा समझ चाहिए साडे चैनल ते जाओ द अरुण भाटिया, उत्थे तुहानू हर कैरियर बारे, GK बारे, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी गुड स्टैंडर्ड ऑफ मटीरियल, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। लॉ डिग्री करने के बाद तुसीं की कर सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, लिटिगेशन जा सकते हो, बट स्टार्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एट लीस्ट एंड एम टू बिकम लॉयर इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। दैट यू कैन डू। इट डजंट मैटर कि तुसीं अर्बन सिटी तो आ रहे हो, तुसीं हाईली एजुकेटेड फैमिली तो हो, तुसीं इंग्लिश स्पीकिंग करते हो, तुसीं बहुत टॉप के स्कूल पढ़े हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर की करता है तुहाडी मेहनत, तुहाडी एस्पिरेशन और तुहाडे राइट स्टैप्स लेने, और असीं इत्थे हां तुहानू हेल्प करन लई, तुहानू गाइड करन लई। उस तो बाद है कॉर्पोरेट लॉयर, जिहड़ी कंपनियां च काम करदे एज ए लॉयर, एज देयर एम्प्लॉइज और लीगल एडवाइजर्स, and fight their cases in the court. Legal advisor to the government, to the public sector, to the banks and to the corporations. Judge बन सकते हो PCS examination देके state level दा, start from civil judge and you can reach to the high court and supreme court depending upon how much you are aware that how you are planning your career and what right steps you are taking to reach to that level. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट वकील, सरकारी वकील, वेरी पावरफुल। हर स्टेट गवर्नमेंट हर साल 2 साल बाद 3 साल बाद 15-20 पोस्टां निकाल दी है, जिन्होंने से कहते हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंड फिर उस तो बाद टॉप लेवल जाके बनोगे जी एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट। देन सिविल सर्विसेज, ISPC का पेपर, बिकॉज तुसी लॉ पढ़िया है, तुसी ऑप्शन सब्जेक्ट ले सकते हो, तो लॉ की भी नॉलेज होगी, ऑप्शन सब्जेक्ट भी तैयार हो गया, और IAS कोई भी बंदा लीगल एक्टिविटीज बारे मिसगाइड नहीं कर सकता। तुहानू पता है मेरा की पावर है, उस ऑफिसर की की पावर है, पॉलिटिशियन की पावर है, एंड वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ लॉ तो तुहानू हेल्प करेगा IAS बनने ली, IPS बनने ली, लीगल जर्नलिस्ट बन सकते हो, मिक्सचर ऑफ जर्नलिज्म एंड लॉ। Then professor of law, पढ़ाने का शौक है पर लॉ कर ली, you can do your LLM, PhD and become professor of law in good university, getting salaries of 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, sometimes 5 lakh. And plus you can be advisor to the different firms. Then NGO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकते हो, अगर ਤੁਹਾਡਾ थॉट प्रोसेस है कि मैं सोसाइटी ਨੂੰ सर्व करना है as a lawyer. So these are the professions we have divided into 9 parts for a lawyer to follow. Next, तैयारी कितना करनी? 17, 15, 17, 18 घंटे तुहानू हर हफ्ते पढ़ना पेगा, क्लास 11वीं ते 12वीं, और लास्ट 3 मंथ्स पढ़ना पेगा अप्रोक्सीमेटली 20 तो 25 घंटे पर वीक। किसने तैयारी करनी है? देखो लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर रीडिंग 45 मिनट लगाना, 4 दिन भी हफ्ते कर लो बहुत है। न्यूज़पेपर की पढ़ना है, उस साडा ट्यूटोरियल देखो, यूट्यूब चैनल पे जाओ, गूगल सर्च करो, पता होना चाहिए कि न्यूज़ लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जरूरी है। वो न्यूज़ में पढ़ो, कटिंग करो, पेस्ट करो और उन्हें बार बार अंडरस्टैंड करो। लीगल रीजनिंग होती है, ये स्पेशलाइज रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग जो मेंटल एबिलिटी क्या है, वेदर यू आर लॉजिकल और नॉट, इट डज दैट। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ एंट्रेंस। देन मैथ्स दे कुछ टॉपिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन एंड सो ऑन। ये बहुत सारा मटीरियल तुहानू साडे चैनल ते मिलेगा।
और जदों 8 हफ्ते रह जान तो मॉक टेस्ट करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सामने रखो और रिवीजन करो। तो ये प्लान है तुहाडी कितने वीक्स दी? 52 वीक्स मीन 1 साल दी। चाहे खुद तैयारी करो, चाहे साडे चैनल तो करो, या किसी प्राइवेट ट्यूटर तो करो, या कोचिंग सेंटर तो करो। सो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग प्रेपरेशन। नेक्स्ट, स्टूडेंट की कहता, देखो लॉ जो ऐसा प्रोफेशन है, लोग कहते मैं डॉक्टर हाँ, इंजीनियर हाँ, पॉलिटिशियन हाँ, मैं IAS हाँ, ये सारे प्रोटेक्ट कौन करता है? लॉ तो, गवर्नमेंट तो, पुलिस तो, सोसाइटी तो। अगर तुहाडे राइट्स इनक्रोच हो गए कौन करेगा? लॉयर। चाहे तुम डॉक्टर हो, उन्होंने कोई इशू आ गया क्लाइंट नाल, पेशेंट नाल, कुलीग्स नाल, हॉस्पिटल नाल, गवर्नमेंट नाल, तो कितने को जाएगा? वकील को, लॉयर को। इंजीनियर है, बिजनेस लीडर है, गवर्नमेंट ऑफिसर जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं अपना हक लैन लई गवर्नमेंट तो या किसी तो भी। एंड इफ इवन इफ यू आर अ पॉलिटिशियन एंड यू नीड जस्टिस, then you will knock the door of a good lawyer. So good lawyer takes care of everyone. So की करते हैं? every citizen, हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूशन, हर गवर्नमेंट कि तू हेल्प लेंदा, लीगल हेल्प, लॉयर। This is the power of being a lawyer, being an advocate. अगर किसी कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚ कोर्ट ही नहीं है, लॉ ही नहीं है, पुलिस ही नहीं है, लीगल राइट्स नहीं है, जजेस नहीं है, लॉयर्स नहीं है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵਿਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼। ਪੀਪਲ ਵੁੱਡ ਲੂਜ਼ देयर ਰਾਈਟਸ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ? कौन कोर्ट जाके दरवाजा खड़काएगा कि राइट्स इनक्रोच हो गए हैं, टेकन अवे हो गए हैं, बिजनेस जो है रोन थ्रेट हो गई है, किसी तो भी इलीगल थ्रेट हो गई है, चाहे गवर्नमेंट तो हो गई है, तो अपने राइट्स कितना लेगा? वकील के घर जाएगा, वकील के ऑफिस जाएगा, उन्हें कंसल्ट करेगा, कोर्ट जाएगा विद हेल्प ऑफ लॉयर। देन सोसाइटी विदाउट लॉयर और जुडिशियल सर्विसेज और कोर्ट is unstable. It is just a jungle raj. So this is a process ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ सोसाइटी ਨੂੰ civilized करता है, law ਦੇ अंडर frame करता है। Next, ਕਿਹੜੇ lawyer ਬਣ ਸਕਦੇ? criminal lawyers. Then you can become corporate lawyer, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ contract, merger में दो कंपनियां ज्वाइन कर गई, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लायंस करनी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ਨੂੰ कौन देखता है? कॉर्पोरेट लॉयर। साइबर लॉ, डाटा, ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल सिक्योरिटी ਨੂੰ कौन चेक करता है? साइबर लॉयर ਉਹਨੂੰ प्रोटेक्ट करता है क्लाइंट्स ਨੂੰ। अगर किसी ਨਾਲ कोई फ्रॉड हो जाए, you can go to a साइबर लॉयर और स्पेशल साइबर कोर्ट्स बनी। देन फैमिली लॉयर, अगर कोई फैमिली ਨਾਲ रिलेटेड मैटर है, चाहे डिवोर्स है, अडॉप्शन है, मैरिज है, प्रॉपर्टी इशू है, तो तुम किहदे कोल जाओगे? लॉयर को। और लॉयर तुहाडा केस लाएगा कोर्ट च और तुहानू प्रोटेक्ट करेगा, तुहाडे राइट्स नू प्रोटेक्ट करेगा। सच अ कंट्रीब्यूशन, सच अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एडवोकेट। हुण अगर तुसी जुडिशियल पास जाना है, जुडिशियल ऑफिसर बनना, जज बनना है, तो उहदा भी असीं रोड मैप दिता है, बहुत ही इंटरस्टिंग, बहुत ही ईजी, अंडरस्टैंडेबल। किस तरह? पहला स्टैप, तुसी लॉ कीती, तुसी जुडिशियल सर्विस की तैयारी की, लॉ के दौरान ही करनी है तैयारी। कई लोग करते लॉ कर ली, 1 साल 2 साल की प्रैक्टिस की, किसी सीनियर वकील के थले उसका काम सीखा, फिर क्या नहीं हूँ मैं तैयारी करूंगा जुडिशियल। ना ना ना, बेस्ट वे है लॉ एडमिशन लैंदे सार यू शुड बी एबल टू डिसाइड विद इन 12 मंथ्स, 1 साल के डिसाइड करो कि तुसी जुडिशियल सर्विस का पेपर देना कि नहीं देना। जिन्नी जल्दी डिसाइड करोगे उन्ना आसान होएगा क्रैक करना, तो उसकी तैयारी शुरू करो। हुण तुसीं सिलेक्ट हो गए तो सिविल जज लग गए, जूनियर जज लग गए, तो तुहाडी उम्र 25 तो 30 साल दे विच होनी चाहिए। और राइट एज है ग्रोथ वास्ते। एडिशनल सैशन जज तुसीं 15 साल दी एक्सपीरियंस तो बाद, 20 साल दी एक्सपीरियंस तो बाद यू कैन बिकम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सैशन जज। और 15-20 साल 25 साल की सर्विस तो बाद जज मीन 25 साल की उम्र च लगे तो 40 साल हो गया, 45 साल हो गया, 50-30 साल की उम्र लगी तो 50 हो गया, 55 हो गया, 50-55 साल की उम्र यू विल बी अ डिस्ट्रिक्ट सैशन जज विच इज वेल रिस्पेक्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट।
and district session judge takes care of the all courts of the district. Then once you have done with this at right age, ਤੁਸੀਂ ਇਸ age ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, then you can be nominated or elevated to the high court provided you have a good record, you have a good reputation, and you are known for your good decisions. So that will be elevated, nominated as High Court judge, where you should reach by the age of 55 or before 60. Otherwise, the retiring age of High Court judge is 62. But if you're following this age pattern, you can reach here. And if you are a very hardworking man, a man who has given the good judgments, and who is a man who is able to have a good networking, then one day you can hope to become the judge of Honorable Supreme Court. Keep in mind, judges of High Court and Supreme Court are appointed by a president through a constitutional process. So this is a caliber-based, record-based elevations where only few judges are able to reach. So you can be appointed as judge of Honorable Supreme Court. You are on the top of your judicial ladder, where you will be sitting in Delhi and taking and deciding the vital cases of national and international importance. So that is the power you will have, being given by the God, given by your own efforts, and so on. And once you are here, then if your age is in your favor and you are able to build up an excellent reputation, then you can be nominated as Chief Justice of India, whose retiring age is 65. And you will become the part of the history if you become the Judge of Supreme Court, Honorable, and you become the Chief Justice of India. So this is all journey starting doing law when you're only 24, 23, 25, and then reaching to the district judge, High Court, Supreme Court, and the Chief Justice of India. Go through this. Imagine your mind as a student. Cannot I do this? Yes, you can do this. If you have a right roadmap, if you're confused, contact us through YouTube channel or go to our YouTube channel and make your own roadmap. You are the best person to find out and judge that whether you are suitable for this or not. If you're confused, meet some counselor or contact us through our channels. Now we will move to the next. What are the three pillars of the government? How the nation runs, how the government runs. There are three pillars. One is legislature. ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ। ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਔਰ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ, ਬਾਅਦ ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਕਟ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ, led by the government if there is an emergency and session is not in session। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ। ਲੋਕ ਮੀਨਸ ਆਮ ਲੋਕ, ਲੋਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? IAS officers, PCS officers, other officers of the government and so on। ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ। These are the three wings of the government: legislature, Lok Sabha and Rajya Sabha, states Vidhan Sabha, कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਹੈ। Second is judicial, district court, high court and supreme court. Next is executive, that means bureaucrats, government officials. ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, you can knock the door of honorable court. So all of these, they keep on balancing each other. So this is very vital for balancing of power, not only in India, in all democratic countries. Even President of America, Trump, has been snubbed by the Supreme Court of that country, where the Trump was wrong in making the law contradicting the American spirit of law, contradicting
the Constitution of America. So that is the power of judiciary and the law profession. Now we will move to the next. What is law? Law will take care of human rights, freedom, equality. कोर्ट सामने सब बराबर है, लॉ सामने सब बराबर है. प्रॉपर्टी अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰॉपर्टी ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰॉपर्टी ਹੈ, ਲੈਂਡ, ਫੈਕਟਰੀ, ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ. ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਨਕਰੋਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਬਾਈ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਔਰ ਬਾਈ ਐਨੀਵਨ, Supreme Court, High Court have the powers to intervene and then restore the democratic setup. Then justice, very important for freedom of human being and growth of human race. Without law, society cannot function fairly and peacefully. Like you look towards your father or grandfather or the head of the family as a person who will be judging everyone in the right way and taking care of the freedom and rights of each family member. Now we will move to the next. Now, if you go to our channel, the Arun Bhatia channel, or to our website, the Arun Bhatia, you will find that we have set up the suitability test. ਅਸੀਂ career suitability test ਬਣਾਏ. ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ judicial services ਲਈ, ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ, advocate ਬਣਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ suitable ਹੋ. अगर तुम कन्फ्यूज हो, साड़ी वैबसाइट पर जाओ, उत्थे जाके क्लिक करो. ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिहड़े असीं तैयार किए हैं. ये कोई AI तो तैयार नहीं किए हुए, ये कोई असीं कॉपी नहीं किए कितों, ये खुद मैं तैयार किए ओवर द एक्सपीरियंस. ये अगर 10 करोगे, अगर तुहाडे मार्क्स 80% ऊपर आ रहे हैं, यू आर सुटेबल टू गो इन लॉ एज ए प्रोफेशन. So this is known as career suitability test. ये लॉ वास्ते भी है और सारे प्रोफेशन वास्ते, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, एवरी प्रोफेशन इज कवर्ड देयर. So go to our website, go to our channel and learn the things. स्टूडेंट्स अकेडमिक्स करनी, पढ़ाई करनी, नंबर लेने, वो एक पार्ट है, पर जो कैरियर ही उस तरह नहीं बनया. सो बहुत स्टूडेंट अपना 99% टाइम किधर लाने हैं, अकेडमिक्स, और कैरियर प्लानिंग ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ हैं. So don't do this. Spend 10% time, 5% time, 20% time on career planning, and we are here to help you. Now we will sum up and telling you law is not just a profession. एक कोई profession नहीं है, एक commitment है, lifelong commitment है for justice, service and integrity. And once you are a good lawyer, we hope your next generation will also follow your footsteps and take your profession to the highest level, higher level. So that is a profession, that is a wealth, intellectual wealth, legal wealth, financial wealth, status wealth, reputation wealth you are building up for yourself and your future generations. That is the way you can create this. So students, हमने discuss किया law entrance, law examination, उसका syllabus, उसकी growth, उसका road map, और उसमें क्या क्या opportunities हैं. आप पैसा कमाना चाहते हो, लॉ है. आप स्टेटस चाहते हो, लॉ है. आप चाहते हो आपको कोई परेशान ना करे लाइफ में, लॉ है. So that is the crux of law as a profession. Thank you, student. I hope you have enjoyed. Go to our channel and learn different concepts, different careers, so that you can make the right decision. Thank you, student.